Monica and I will be your Epedagogue for the subject of science. तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही फन चैप्टर करने वाले हैं. इस चैप्टर में all we have to do is whistle with our mouth. Yes, you heard me right, students. All we have to do is blow out air and take it in. As the name suggests, for chapter 15, blow hot, blow cold. So we will be learning how we can blow with our mouth and what does it make it feel in our environment. So let's start. There was a woodcutter. Every day in the morning, he used to go to the forest to cut wood. In the evening, he would sell the wood in the city. One day, he went deep into the forest. It was a very cold winter. His fingers were becoming numb. Every now and then, the woodcutter would put down his axe and bring his hands close to his mouth. Then he would blow hard on them to warm them. तो ये एक स्टोरी है बच्चों एक वुडकटर की जो हर इवनिंग में वुड को बेचने जाता था इन द सिटी. एक दिन वो बहुत ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में चला गया, बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम में. जैसे जैसे वो अपने एक्स से वुड काट रहा था उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे. उसको हील करने के लिए उसने क्या करा, वो उन्हीं हाथों को अपने पास लाता एंड ही वुड ब्लो हार्ड लाइक दिस ऑन हिज हैंड्स एंड ही वुड फील वार्मर. While he was cutting wood, Mian Balishtiye was watching him from a corner. Mia Balishtiye saw that the woodcutter kept blowing on his hands. He began to wonder what all that was about, but he could not understand it. He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. After walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked. Finally, Mia Balishtiye could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said, "Hello brother, if you don't mind, can I ask you something?" Seeing this tiny person, the woodcutter was amazed and amused, but he hid his smile and said, of course, ask what you want to. All I want to ask is that do you blow from your mouth onto your hands? Said Mia Balishtiye. तो जब हमारा वुडकटर ये काम कर रहा था, उन्हें एक मियाँ बालिश्तिये जो हमारे कैरेक्टर हैं, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, वो देख रहे थे एंड ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि ऐसा क्या है जो वो कर रहे हैं अपने हाथों पे ब्लो करके और इससे क्या हो रहा है, क्या वो एयर ही ब्लो कर रहे हैं. ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ एंड ही वेंट देयर एंड आस्क्ड. By looking at him, the woodcutter was amazed, but he kept that to himself and he said that of course आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं. तो मियाँ बालिश्तिये फाइनली अपना क्वेश्चन उनसे पूछते हैं by asking कि आप अपने हाथों पर इस हवा को ब्लो क्यों कर रहे हैं. The woodcutter replied, "It is too cold. My hands are frozen, so I blow on them to keep them warm up a little. Then when they get cold again, I warm them again by blowing." Mia Balishtiye nodded. So that's it. And with that, he moved out. But he stayed nearby and kept a close watch on him. तो जैसे ही हमें वुडकटर ने क्वेश्चन सुना, उन्होंने हमें बताया कि इतनी ज़्यादा ठंडी में हाथों से काम करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं. तो उन्हें टाइम टू टाइम गर्म करने के लिए वो अपने हाथों पे ऐसे हवा को ब्लो करते हैं जिससे उनके हाथ थोड़े से वार्मर साइड पर जा सके. मियाँ बालिश्तिये ने समझ लिया और फिर वो मूव ऑन तो कर गए उस बात से, but he stayed nearby to observe him more. Soon it was afternoon. The woodcutter began to think of lunch. He picked up 2 stones and made a chula. He lit a fire and put a small handi filled with potatoes to boil. The wood was damp, so the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn. Balishtiye was watching him from a distance. "Arre," he said to himself, "there he goes again, blowing from his mouth. Does fire come out of his mouth?" The woodcutter was feeling very hungry. He took out a potato from the handi. He tried to eat it, but the potato was too hot. He again began to blow it. "Arre," said Balishtiye to himself, "he is blowing again. Now what? Is he going to burn the potato?" After blowing a few more foo-foos on it, the woodcutter put it in his mouth and began to eat it.
तो क्योंकि मियाँ बलिश्ती उन्हें ऑब्जर्व ही कर रहे थे, वो देखते हैं कि कैसे वुड कटर सोचता है कि अब मुझे खाना खाना चाहिए। तो जो खाना बनाने के लिए मिडल ऑफ द फॉरेस्ट वो कुछ स्टोन्स और डैम्प वुड गीली लकड़ी को लेकर उसमें ब्लो करके फिर से आग जलाते हैं। तो मियाँ बलिश्ती सोचते हैं कि क्या अब उन्होंने अपने मुंह से आग डाली है, ऐसे ब्लो करने से आग कैसे आ गई। फिर धीरे धीरे उन्हें ऑब्जर्व करते हुए वो देखते हैं कि कैसे वो आलू निकाल के खाना चाहते हैं, पर आलू इतना ज़्यादा गर्म है क्योंकि उस हांडी में उस पॉट में बॉयल हो रहा होता है। तो फिर से वुड कटर उसे ब्लो करते हैं। तो इस बार फिर से मियाँ बलिश्ती सोचते हैं कि ऐसा उनके मुंह में है क्या जो वो फिर से उसे ब्लो करके पोटैटो को खा भी गए। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है। Now Mia was very surprised. He just could not stop himself and off he went hopping to the woodcutter. "Hello brother," he said. "If you don't mind, can I ask you a question again?" The woodcutter replied, "Not at all, ask whatever you want." Mia Balishtia said, "This morning you told me that you blew on your hands to warm them up. Now you are blowing on this potato, which is already so hot. Why do you want to make it hotter?" No, my little friend. This potato is too hot. I am blowing on it to cool it down. When he heard this, Mia Balishtia's face became white. He began to tremble with fear and started to back away. The woodcutter was a good man. He said, "What's wrong, Mia? Are you trembling because of the cold?" But Mia Balishtia kept going backwards. When he was at a safe distance away, he said to himself, "What kind of creature is this? Surely he must be a ghost or a jinn. Blow hot, blow cold with the same breath? It is just not possible." That's right, there's some things which just cannot be, but they are. This is a very good extract by Zakir Hussain. और जैसा कि हमने देखा बच्चों, मियाँ बलिश्ती उनसे पूछते हैं फिर से, ही could not help himself, कि कैसे आपने आलू भी इसी से करा, आग भी और अपने हाथ भी। तो वुड कटर उन्हें बताता है कि आलू तो बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने उसे ठंडा करने के लिए ब्लो किया। तो मियाँ बहुत ही अमेज हो जाते हैं, वो दूर जाने लगते हैं, डरने लगते हैं कि ये तो ज़रूर कोई जादूगर है। सेम ही ब्रेथ से, सेम ही ब्लोइंग से पहले इसने ठंडे को गर्म करा और अब गर्म को ठंडा भी कर रहा है। तो धीरे धीरे मियाँ बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि कुछ चीज़ें लगने में इम्पॉसिबल होती हैं, बट दे आर वेरी मच पॉसिबल। Mia Balishti was confused when he saw the woodcutter blowing on his cold hands to make them warm and on the potatoes to cool them. Have you warmed your hands in winter by blowing on when they are cold? How does it feel? Sure students, जब भी हम बाहर जाते हैं ठंड में, बहुत ठंड होती है, तो we rub our hands and we blow on them to make them warmer. I'm sure you all must have done it. Blow hard from your mouth onto your hands. How did you find the air from your mouth as compared to the air? Was it hotter? Was it cooler? Students, make sure you do this activity. When I did this activity multiple times by telling you all, I found this to be hotter. This air that was coming out of my mouth to the hands, it was hotter than the air around us. Now put your hand at some distance from your mouth and blow again. Does the air from your mouth feel warm? Yes. स्टूडेंट्स, एक बार तो आप करेंगे इसको बिल्कुल पास करके, एक बार करेंगे थोड़े डिस्टेंस से। तो जब हम थोड़े डिस्टेंस से करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो जो एयर है उतनी ज़्यादा वार्म नहीं होगी, नॉट सो वार्म एज इट इज़ मिक्स्ड विद द सराउंडिंग एयर, क्योंकि वो सराउंडिंग आसपास की हवा के साथ मिक्स हो जाती है, इसीलिए वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लेसर वार्म हो जाती है। Can you think of any other way in which you use the warmth from your breath? So I have written this one way as the eye injury बच्चों, कि जब हमारे आँख पे कभी चोट लग जाती है तो we take up a cloth and we start blowing in hot air. I'm sure students, आप भी बहुत सारे answers लिख सकते हैं as to how you have used blowing as a technique that would help you. This is the procedure that is given to us. Fold a piece of cloth 3 to 4 times. Now bring it close to your mouth and blow hard on it. Did the cloth become warm? Sure students, आप लोगों ने कभी ना कभी बच्चों के साथ करा होगा या आप जब बच्चे थे. If not, make sure you do it.
Balishti saw the woodcutter was trying to cool the hot potatoes by blowing on them. What would have happened if he had eaten the potatoes without cooling them? तो बच्चों ऐसे बहुत बार होता है जब हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खा लेते हैं तो the surface of our tongue and our upper jaw, उसके जो गम्स का सरफेस होता है वो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन फील करता है. उसके साथ साथ वी ऑल्सो फील सम डिस्कम्फर्ट एंड पेन. वो इसलिए होता है बिकॉज हमारी जो टंग है, जो माउथ है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर है. कुछ बहुत ज़्यादा गर्म खाने से वो सरफेस जल जाता है थोड़ा सा, और इसीलिए 3-4 दिन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. Have you ever burnt your tongue when you ate or drank something that was too hot? How do you cool some food when it is too hot? So बच्चों, जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी बहुत गर्म चीज़ आती है खाने के लिए या पीने के लिए, तो हम जब भी उसको खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया द सर्फेस इट बिकम्स अ लिटिल बर्न्ट. तो उसको ट्रीट करने के लिए आई हैव रिटन अ रेमेडी, एनीथिंग कोल्ड. इफ़ यू यूज़ एनीथिंग कोल्ड, फॉर एग्जाम्पल यू कैन पुट आइस, यू कैन हैव कोल्ड वाटर, यू कैन हैव एनी कोल्ड बेवरेज, उससे आपको थोड़ा बेटर लगता है. द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्स अस हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट. तो इसको करने के लिए हम जनरली उसे फ़ैन के नीचे रख देते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें ब्लो करते हैं. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोग भी अपना खाना ठंडा करते होंगे. राइट योर ओन आंसर्स कि आप वो कैसे करते हैं. If you were to cool these hot things, dal, roti, rice, in which ways would you do so? So I've written these 3 ways that I know of, such as putting it around a fan, blowing, and also refrigerator. तो किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए I've written these 3 methods. Make sure students you write your own answers as आप अपने खाने को कैसे ठंडा करना चाहेंगे.